So today we will do weekly contest 262. Okay, let's start virtual contest. Okay, start हो गया हो. Hmm. Does contain all the values that given in at least two orders in what okay. Okay, it's possible कि वो duplicate होगा. So how do I check the duplicacy of the number? Interesting. So foreign type equals to 0, I less than num slot size I plus plus or equals to 1. Foreign type equals to 0, I less than nums 2 dot size I plus plus count of nums of I or equals to 2 or is equals to 0 I less than nums 3 dot size I plus plus of nums of I or equals to for auto being num. यार इसमें डुप्लीकेट भी आएंगे डिस्टिंक्ट एराबिलिटी के सही. So if v is equals to 3 or v is equals to 5 or v is equals to 4 plus 2 is 6, right? 4 ठीक है, 2 4 1 4 6 हो गया, 4 1 2 1 ठीक है. So it will be answered after push back to v, return the answer I guess in num from above. So let's say what up in normal num 1 num 2 num 3. Okay, nums है यार. What? Okay, तो यहाँ पे v dot first आएगा, v dot first आएगा, और फिर v dot second आएगा. v dot second. I will tell you what I'm doing there, but let's try to finish on something here first. 2 आ रहा है बस, जो कि गलत आंसर है, because 3 is the right answer here, because 3 का इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो it will be what? It will be is equals to 3. So if it's equals to v dot first comma second प्रिंट करके दो मुझे. 2 में आंसर तेरा 3 है, but about 3 it is 1 and 4, it should be 5. आया ही नहीं. Why? 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 So you got 3 in all of them, right? Okay, okay. So in all of them this time. So v dot second is equals to 7. Be possible है. It will be 2 and 3. Let's submit it. Okay, now I'll explain it after the contest. Right. You are given 2D grid mm to n. In one operation, you can add x to or subtract x from an element in the grid. Okay.
union over operation uni value add x minus x तो क्या है add x and minus x from an element इधर ठीक है ओके हम्म मिनिमम नंबर ऑपरेशन निकाट में है ठीक है सो एटलीस्ट एक तो आंसर होगा वहाँ पे यार ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है माइनस वन व्हाट व्हाई in one operation you can add x अच्छा x given है ओके ओके ये इंटरेस्टिंग है because if x is given then let's say uh, at the end this is my answer like सब मैट्रिक्स में वैल्यू होगी then uh, every element का यहाँ पे x का मल्टीपल होना चाहिए मल्टीपल ऑफ x का डिफरेंस होना चाहिए so like if this is my answer and this is my uh, u and that is current element then abs of u minus v mod x should be equals to 0 right something like that and interesting thing about that is it will be still that only right कि at least एक there is one number in matrix one number in the matrix should be the answer right so now I can loop over that value what if this is the answer then the value thus if this is the answer then oh okay this is easy some mod anything right mod is x small is no x ain't small but x ना बड़ा भी नहीं है फिर हम्म ओके मेरा क्वेश्चन अब ये है कि मान लो you want to reach here at how to reach this point how can I calculate it of one or log something आंसर फॉर सारा नंबर का यहाँ पे आने के लिए वैल्यू कितनी होगी ये क्वेश्चन है यार पर एक मेरा पॉइंट ये है हम्म 10 to the power 4 right so what is my point is I want to get this pin of 1 can I do that hmm so you can get is no that can't do that okay I can do that I guess I can do that yes so oh sum of all numbers less than that sum of all numbers greater than that something like that will happen so if I do something like this right? Vector of int array of point win sorry for auto win grid or auto win c what arr dot pushback v
Now I want to sort error dot begin and error dot. And so now for it to be ever the answer, the mod of x for every one of them should be equal, right? Set of interface mark there. And I'll also like to insert here s dot insert v mod x. Right. So if uh, s dot size is greater than 1, return -1, else देखो md की वैल्यू मिल जाएगी, तो सबकी सेम वैल्यू होगी तो क्या फर्क पड़ता है, right? So I would like to do sum previous. I like to do total sum also, right? So like this is my total sum. Sum plus equals to v, and this is your temp sum. For int I is equals to 0, I less than n, I plus plus I less than arr dot size I plus temp sum plus equals to arr of I. Then my answer will be minimum operation, right? So minimum operation I let's assume it to be 10. No. So answer will be minimum of answer common. So in sum minus equals to error of I. So I'll do this thing first, right? Error of size. We'll do this. So it will be I plus 1 multiplied with error of I plus temp sum minus tmp sum divided by x, right? Plus n minus I will be the numbers after it. Numbers after it will be n minus I minus 1 into. So it will be sum minus n minus I into 1 into error of I divided by x. Return the answer, I guess. Compilation error, long error. Okay, minimum, no matching function. कौन सा function? long and long है and ये क्या है? ये long नहीं है, तो क्या हो गया? अजीब हो यार. 4 is my answer. 4 5 minus 1. But I know this is correct, but there can be more for this. Okay. You are given a string of record for a particular stock. Okay, each record is a timestamp corresponding by the stock. Unfortunately, due to the volatile nature of stock market, the record do not come in order. Even for some, okay, updates the price of the stock at a particular timestamp corresponding at the price of any previous record. Wow, good English. Hmm. तो अजीब है.
Hmm. What? I don't know. Like the timestamp. The timestamp. Okay. Return the latest paragraph. Okay. Okay. तो मुश्किल क्या है? तो हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प में वैल्यू होगा. ओके. ओके. यस. Hmm. Interesting piece of advice. Maximum price of the stock and then the minimum price of the stock. To calculate the maximum price of the stock, it's not very it's not very hard. I would like you have many sets. Yeah. Calls तो I guess कमी होंगी. Yes. Calls तो कमी है. Stock price पहले आ रहा है पब्लिक में, right? तो उससे पहले मुझे पब्लिक में नया int comment day price. ठीक है. I have one set of maximum and minimum. Maximum price of stock. Okay. Available price and और क्या होगा इसमें? अपडेट करने के लिए मुझे वो चाहिए. पर अवेलेबल प्राइस मल्टी सेट करना पड़ेगा इसको. मल्टी सेट. So when you want to change a timestamp, whatever first do it, avl dot erase, avl dot find. If avl dot find is able to find what day price of the timestamp. Timestamp means वो day मानता हूँ मैं. Okay, and then avl dot insert price as well as day price of that day is equals to price, right? And current gives me the current price. Like this is not hard. What if there is no price? तो देना चाहिए कि लेटेस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक. ठीक है. नो प्राइस रिकॉर्ड्स. ठीक है. फाइंड द फाइंड द लेटेस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन द करंट रिकॉर्ड. ठीक है. बट व्हाट इफ देयर इज नो रिकॉर्ड? आई गेस आई एम अज्यूमिंग देयर होगा कुछ ना कुछ. विल बी डे प्राइस. नहीं रिकॉर्ड है. सही है. डे प्राइस डॉट एंड डॉट सेकंड आई गेस. मैक्सिमम विल बी avl dot and here it will be just avl dot begin. Hmm. Yeah. Time limit exceeded. How is this ever possible? फाइंड होता है ना. यस होता तो है. व्हाट इज रॉन्ग देन? Updates price, inserts the price. Interesting. If day price dot
count day only, then you will do it like this. Null 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 510 null 52 और तो है ही नहीं मतलब I would check that to this only. Hmm. Okay. Weird. Okay, this is a good question, I guess. You are given an integer array nums of two and integers and partition numbers to arrays. Absolutely know this sum of that thing. Okay. To partition nums in one of the two arrays. Wow, that's आसान है. And 15 hours. देखो बस तुम्हें चेक करना है कि वो किस में आ रहा है. And अगर 15 है, then वो नहीं आसान नहीं because मतलब वैसे हो जाएगा. ठीक. Absolute difference है. And 15 है, right? So वही तो बोल रहा हूँ ज़्यादा पता है वो नहीं. That is not available. What I can do is, but मैं store नहीं करता है difference को और sum को कुछ भी. How can I store this one? कर तो सकता हूँ वैसे कम not sum भी नहीं. 10 की power 7 into 30 कितना होता है? 10 के बाद 8 हो जाएगा. 10 के बाद 9 हो जाएगा. It will work. Think about think about what? Hmm. So there are 30 and it's 30. Right? You got to choose or not choose. Well, if I do recursion kind of thing, if I choose or not choose not choose, I can also no, I can do DB. No, some will be very very big. Some will get very very big. You can't store that. Oh, can I back to normal recursion? Hmm? So every point has two options. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 वही तो बोल रहा हूँ. ज़रा हो जाएगा. 2 का 30 is a very big number. बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हम्म, तेरे को वो नहीं निकालना है कि तेरे को उसमें क्या चूज करना है. तेरे को निकालना है whom are you choosing. That's the only question. तू अपना सब निकाल ले बस. है ना. तो अपना सब निकाल ले. तेरे को होना चाहिए बस 15 चाहिए ना एग्जैक्टली. तेरे को पता है कि कुछ करने को. राइट. तो या यहाँ तक मैंने जो सीखना ही ऐसे नहीं बनेगा ये. राइट. ट्रेन टिकट नहीं भी लगता नहीं भी लगता हूँ. ऐसा सीन है. हम्म. तो मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस जो बोलना चाह रहा है वो मिनिमम चाहिए ना तेरे को. तो तेरा ओवरऑल सम होगा. राइट. तो यार फर्स्ट गोल विल बी टू डू बाय टू. राइट. बाय टू का क्या है कि यहाँ पे पहुंच जाएगा. इट विल बी बेस्ट फॉर दिस वन कि बाय टू में आ जाए. बट हो सकता है पॉसिबल ना हो. इंटरेस्टिंग.
यार मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जेनेरिक क्वेश्चन है। हम्म, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ आई डू सिंपल ब्रूट फोर्स, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ? आई एम जस्ट चूजिंग 15 ऑफ देम, राइट? 30 C 15 will be very big. You choose this. You don't choose this. There must be some breaking point there, right? That, वो तू गलत है होता है, पता है क्यों? मान लिया है ना 4 2 2 1 है। अब तू बोलेगा कि जो तो इक्वल पढ़ा दे बेस्ट ऑप्शन ये चला, पर ये गलत ऑप्शन है वैसे। क्यों? फिर बेटर ऑप्शन होगा कि यहाँ से आए और यहाँ पे जाए, right? बट तो नहीं हटा देगा, तो इक्वल देगा, right? जैसे कि इसमें आंसर एब्सोल्यूट 1 है, बट अगर तू दो को हटाया जाए तो इधर आंसर एब्सोल्यूट 3 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। ओके। हम्म 15 are the numbers because that thing na 2 to the power of 15 is variable, can bear that, but after that it gets out of control, right? Oh, 15 into 15 into 10 to the power 7 thousand. It's a big number. It's a big number. How much big number? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 into 10 to the power 8. So it could work under 1 second if I do that. ना ना ना, बट ये तो सम है ना, तो सम है। मैं सम ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। हाँ। 3973. Absolute difference you said. Okay. Which number will he choose for himself? You know what I can do? No, I can do. I can't do that. Well, there is a thing I can do.
This is my tin का array. This is the thing. Hmm. So I make the 32,000 into that possible combinations here. Then for each of them, I do same thing here. It's the same thing, you know. It's the same thing. 2 to the power 15 into 2 to the power 10 becomes 2 to the power 30. Uh, so what are the different? What are the different? Hmm. क्या होगा लॉजिकली 7 वाले में बहुत सारे आंसर आएंगे right? इस वाले में एंड यहाँ से मान लेते हैं 8 आई गेस 8 वाले का पर्टिकुलर भी चल रहा होगा ना सब मेरा इस वाले में राइट तो नाउ देखो 8 वाले का नहीं हाँ तो यहाँ से 7 वाले में जितने सम है ना उसमें से यू आर रिक्वायर्ड टू चूज इन दोनों में से कोई एक चूज करेगा राइट मिडिल एलिमेंट में से कोई एक चूज करेगा ना जो भी तेरा रिक्वायर्ड है उसका या फिर नेक्स्ट वाला उसका प्रीवियस वाला सो आई गेस इट कुड वर्क जो मैं बोल रहा हूँ बट थोड़ा वियर्ड केस है इसमें और अगर मैं इसको वर्क करा ही रहा हूँ ऐसे तो 15 और 15 ऐसे मतलब आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे ऐसे रन हो रहा है समझ रहा है आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आई होप n is even first of all n is even okay so n equals to nums dot size ठीक है now we have vector of vector in n plus 1 here d1 and फिर here d2 d2 की जगह n plus 1 है right for int I is equals to 0 I less than I plus plus okay इस 15 से जाएगा right so it will be p1 will be equals to p will be equals to 1 LL of p will be equals to n by 2 right so it will be less than 1 LL of p right now what I like to do is तो तेरा x है int sum equals to 0 for int I is equals to 0 I less than p I plus plus if x and 1 LL of x 1 LL of I in that case this is in the sum then what I will do is I'll do sum plus equals to error of I and also I have to count here count equals to 0 count plus plus okay मैं d1 dot count dot d dot count dot push back till it is p and not that d1 dot push back sum right I want to say the same thing but this time this will start from p and go till minus n you will check for this and you will upload this आई ही करेगा बट हम चेक करेगा ठीक है माइनस पी एंड यहाँ पर डी टू पर पुश बैक हो जाएगा
एंड यहाँ पे फॉर int I is equals to 0, I is equals to 0, I less than equals to p, I plus plus sort d1 dot begin d1 dot यार ये आंसर नहीं हो गया थोड़ा सा बिकॉज तेरा 32 तेरे होंगे नहीं यार उसमें अलग नहीं करूंगा मैं कर जाएगा टू बार का है फिर डी टू कर रहा उसको बट यार अब मैं रन कैसे करूंगा उसको वैसे ही रहेगा ना उसको कैसे कर रहा था आई लेस देन इक्वल्स टू पी आई प्लस प्लस d1 क्लाइम फाइंडिंग d2 राइट सो j इसका हो जाएगा क्या j विल बी इक्वल्स टू p minus I guess now for enter so now for I will go into for intervene d1 of I d1 of I d1 of I में जाऊंगा मैं I will be getting a sum right I will get a sum तो आइडियल केस सिनेरियो क्या है मेरा आइडियल केस सिनेरियो आइडियल इक्वल्स टू 0 फॉर ऑटो v nums ideal plus equals to v ideal divided by equals to this is my ideal case scenario where each of them get तो एक का मैं अपर बाउंड निकालूंगा ऑटो it will be equals to upper bound of d2 of j and what I'm finding is tr will be equals to ideal minus v ideal minus v upper bound of tr but now if it is equals to if it is not equals to d2 of j dot and then your answer int answer equals to 1 e 18 मांगा जाता है बेचारा इसको लॉन्ग नंबर पड़ेगा लॉन्ग नंबर से ले नहीं जाओगा उसको बट चल कोई नहीं सो माय आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सो माय total sum equals to ideal I am doing a very bad coding here total sum minus uh, star it minus uh, v हाँ सो 22 बढ़ जाएगा मतलब माइनस स्टार it माइनस v इसका जो abs होगा वो तेरा आंसर होगा right? वो तो बड़ा था 22 कर देना इसको एक बार right and then I would like to do it नहीं है and if it is not equals to if it is not equals to d2 of j dot begin it minus minus and do the same thing again I guess okay यार करो यार and
X time. Figure X. What's wrong with you? Expected. लेना expect कर रहा है तो कर सकते. Upper round no magic engine. अच्छा. Dot begin. D to J dot end. Minimum. Compilation error. No matching function for minimum, long round and int. तो मैं कर तो दिया था इंट्रो. वन लेवल पे यहाँ भी करना पड़ेगा. Two is the answer. Two is the answer. Okay, 72 and 0. So it is working here. I don't know if it is there or not. Let's submit it. Okay, it worked. Okay, nice. So let me fast explain all this. Right, right. So the first one was we need to check if in the set of all the numbers which appear in at least two of the three arrays, right? So what I did was if the value appears in the first array, I will do the count of x or is equals to 1. Okay. If it appears in the 2, then I will do count of x or equals to 2, and then at the end I will do or equals to 4, right? So you can see this is power of 2, and later I can check if it appears. If it's 3, that means it appears only here and here, right? Only in this is first one, this is second, and this is third. So if it's 3, then for this 3, it is only occurring first and second. For this 5, it's only first and third. And for 5 or 6, it is in second and third. And for 7, it is in 1, 2, and 3. So this covers all the cases. And in these cases, if any of this comes out to be true, apply the element. Okay, there must be a better word than this, I guess, but it's okay. So this is the minimum operations to make a uni-value grid. Right? So there are two things. First of all, let's say this is the grid, okay, and the answer is x, right? And let's say a generic value is v, right? V. So for x to be the answer, you should be able to achieve x from v. Okay, let me rename this to v. Generic is a, and this is your answer, right? So a should be kx. अगर प्लस करूंगा मैं देन b बन जाना चाहिए, राइट? तो ये तभी होगा जब a mod, फर्स्ट ऑफ ऑल दो केस हैं. पहला केस क्या है कि a mod x शुड बी इक्वल टू b mod x. जो आंसर का मॉड है वो इधर हर एलिमेंट का मॉड होना चाहिए, राइट? फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि सेकंड कंडीशन नहीं है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है. लेट्स से माय आंसर इज 30 and my x is 2, right? So the answer has to occur there, right? The answer should occur there. Let's say, let me make this in a graph, right? Let's say this is the value of, this is x value, right? ये three values हैं जो उसमें आ रही हैं ग्रिड में, and this is my answer, right? This is my answer. So some values will lie here,
some values will lie here, right? So मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि all these values greater than, first of all चीज क्या है कि this value should occur in array, मतलब in grid. अगर if नहीं आ रही है array में, वो grid में नहीं आ रही है, then the better option will be to choose any other one ना, किसी और को चूज कर लो. Why do you want to choose this? इसका कोई एग्जांपल मैं कैसे दिखा दूंगा एग्जांपल? हम्म सर एग्जांपल दिखाना था मैं तुमको यार. तो एक बार मान के चलो कि वो आ रहे, ठीक है? तो अगर एरे में आ रही है ना, तो इसमें क्या करूंगा मैं कि मैं सॉर्ट कर लूंगा और उसको एंड देन आई विल कंसीडर दिस एज द आंसर, राइट? टेक दिस एज आंसर. This is the answer. What will be the case? If this is the answer, then how can I calculate? So sum of small uh, is a count into I minus sum of small. ये होगा तेरा for the to getting for getting the smaller number to error I. इसको यहाँ तक लाने के लिए कितना सम लगेगा वो होगा इसका आ जाएगा, और मूव कितने लगेंगे वो डिवाइड एक्स्ट्रा आ जाएंगे. एंड देन सम ऑफ लार्जर माइनस काउंट इनटू एरर 5 विल बी व्हाट. इन सबको यहाँ इस आंसर तक लाने के लिए कितना लगेगा समय, एंड देन सम को तो एक्स डिवाइड कर देगा, सो यू गेट द मूव्स कितने रिकॉर्डिंग. तो मैंने भी यहाँ वही किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऊपर से क्या है कि सबका मॉड इक्वल लेकिन मैंने एक सेट में सबके वी मॉड एक्स को डाला है, एंड देन अगर वो सेट का साइज 1 से बड़ा है देन आंसर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? देन व्हाट आई डू वाज आई सॉर्टेड द array. Array is the array containing all the elements in the grid, right? So now for each I sorted it because it's easier to get all the smaller elements and the small sum of four elements and some of the greater elements, and this is basically me calculating how can I get. This is the first part here, this this, and then second is this. You will understand it. Or here is the easiest question. What I did was I take three things: day price and AVL. Day price is the map, is basically day and price pair, and available is multi-set. Okay, this is multi-set of all uh, prices in day price. मतलब basically जो भी available price है उनका multi-set है. So every time for maximum and minimum, I can get maximum and minimum in log n, right? Simply AVL से मिलता है maximum minimum. And for day price for updation, what I do is first of all I will, if it's already in there, then I will erase it from AVL. Just only one occurrence of it, and update the day and insert the new price in AVL. And for current is the latest price. And latest price मतलब क्या हुआ कि highest day, maximum day में जो प्राइस है वो रिप्लेस मैंने रिटर्न कर दिया बस. तो it's straightforward, I guess. This question was, I guess, good, but my approach is also a little bit impressive, I guess. So what the approach is? What the question is, first of all, there is n which is even,
array, you have to uh, divide it, divide n by 2 and n by 2, such that sum का जो difference है वो अच्छा है, right? So what I did was, mm, uh, let's say what is ideal condition? Ideal sum for first person will be a total sum divided by 2, right? And now what I did was, let's say this is my n. I loop over every possible combination. Half part. I'm choosing the half part. I don't know why I'm choosing the half part, but this is the uh, value exactly formula being there. D1 of x will have all the possible values a first person can get from first half choosing only x elements. Okay. Uh, and similarly for D2 of x, this will be uh, all the possible values uh, second person and first person can get from second half for choosing x element, right? So let me clarify. Now let's say d1 of x to choose d1 of x का d1 of x से कोई v आया जो उसने चूज करा है, right? So for this particular v, what will be the perfect value in other half? It will be ideal minus v, right? So what you will do is you will find let's say for every v, for for v in d1 of x, uh, uh, your mm, u will be equals to ideal minus v, and you will find the so one x will be greater than u and एक y होगा जो less than is equals to u होगा in d2 of what? So oh my god. So let me change it. But so this is my a, this is my b, and my y is equals to n by 2 minus x. So this will be your y, and in d2 of y. So इन दोनों के लिए चेक कर ले बेस्ट आंसर कौन सा है, बस यही आंसर. तो मैंने और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व भी कर लेना बिकॉज इसमें आंसर लोग आंसर मिलेगा, अपर बाउंड है लोग आंसर. तो बस मैंने सॉर्ट कर लिया. इसमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, इस फाइल को. इसको सॉर्ट कर लिया मैंने एंड देन वही निकाला है मैंने आइडियल वैल्यू से मैंने करके. टीआर इज द टारगेट आई वांट टू फाइंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड इट ए. पहले मैं ए फाइंड करा अब अराउंड डी2 में डी2 ऑफ जे में टीआर को. ठीक है. अगर वो एंड में नहीं जा रहा है देन आई चेक. बट वेट देन थोड़ा वियर्ड है वो, बट इसमें आंसर कैसे आ रहा है एक्चुअल में. ये पीछे आना चाहिए, ये आना चाहिए. दूसरा आंसर सही कैसे आ रहा है, बट ये बाहर आना चाहिए. I guess. Okay, so basically this is uh, uh
checking for A and checking for B. And A है A is element greater than target and your B will be less than equal to target. उन दोनों का जो आंसर होगा उसको मैं अपडेट कर दूंगा बस खत्म बात. So I guess you are. I hope you understand this. Submit it again. Let me check how good is this. So it's not that good. Definitely will look for the better solution afterwards. मुझे रैंक दिखेगी अपनी इसमें. Oh my god. Okay. Okay then. Thank you. Bye bye.